Have you ever wondered why a car battery can be recharged hundreds of times, but an ordinary dry cell usually can't? The answer lies in one fascinating electrochemical principle. Today we have to study about lead acid storage battery. तो पहले लेड एसिड स्टोरेज बैटरी मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ सेल्स में जब हम बात करते हैं हम कहते हैं प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल एंड दिस इज अ सेकेंडरी सेल. सो व्हाट इज अ सेकेंडरी सेल? A secondary cell is a cell, yes, which can be recharged by applying the direct current to pass through them, and hence it can be used again and again. So these cells, these secondary cells, they are also called as accumulator cells because electrical energy can be stored in them. And one of the examples is lead acid storage battery. और lead acid storage battery क्या है? अगर हम देखें frequently हम इसको यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में या घर में जो हमारे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं वहां पे हम इसको यूज करते हैं. यहाँ पे हमें पॉइंट ये समझना है कि ये जो सेल्स है, these electrochemical cells, these voltaic cells in this battery, they are connected in series. So they may be either made up of 3 voltaic cells or 6 voltaic cells, and these 6 voltaic cells are connected in series. The point is why they are connected in series, so as to get the maximum amount of the voltage, because in series connection where voltage is getting added up. So that means if each cell is having 2 volts, so it would be of 6 volts battery. Clear? So that is why we are connecting them in series. तो ये लेड एसिड स्टोरेज बैटरी या तो 6 वोल्ट्स की होती है या तो ये 12 वोल्ट्स की हो सकती है और अनवर्ड्स भी हो सकती है. जो 6 वोल्ट बैटरी जो होती है उनमें कितनी सेल्स होती है? 3 सेल्स. ईच सेल इज जनरेटिंग 2 वोल्ट्स, दैट मींस दैट वुड बी 6 वोल्ट्स. 3 into 2 will be 6 volts. Likewise 12 वोल्ट बैटरी जो है उसमें कितनी सेल्स होगी? 6 सेल्स, क्योंकि ईच सेल इज जनरेटिंग 2 वोल्ट, सो 6 into 2 will be 12 volts. ठीक, क्लियर हो गया? तो ये लेड एसिड स्टोरेज बैटरी की कंस्ट्रक्शन क्या है? अब ईच सेल इज हैविंग एन एनोड एंड ईच सेल विल बी हैविंग ए कैथोड. जो एनोड यहां पे होता है दैट इज अ लेड पैक्ड विद फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड. सो these are the anodic pellets, lead anodic pellets. This is the lead packed with finely divided spongy lead, and you know that in an electrochemical cell the anode represents the negative terminal of the battery. Clear? Likewise you are having a cathode. This is a cathode. These 3 cathodic plates are connected togetherly and they make a cathode, and this cathode is what? It is lead packed with solid paste of lead dioxide. ठीक है ना? So this is acting as a cathode, and cathode you know it is the positive terminal in the battery. Clear? And now 3 चीजें मालूम होनी चाहिए जब भी हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे. तो 3 चीजें हमें मालूम होनी चाहिए. वन इज एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है. तो एनोड आपको पता है, इट इज द lead packed with finely divided spongy lead, and cathode is the lead packed with solid paste of lead dioxide, and electrolyte is concentrated aqueous solution of sulfuric acid, and which is 38% by mass. It is having a density of 1.31 grams per cubic centimeter. So this is the construction. अब वर्किंग पे आएंगे हम. वर्किंग मीन्स जब ये सेल जो है वर्क करेगी, यानी देयर विल बी अ डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, देयर विल बी अ डिस्चार्जिंग ऑफ. सो डिस्चार्जिंग रिएक्शंस क्या है यहाँ पे, या वर्किंग कंडीशन में क्या करता है ये, एनोड पे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग एट द एनोड. तो अब मैंने पहले ही बताया कि एनोड जो है दैट इज अ lead packed with finely divided spongy lead. So lead is undergoing oxidation and it is producing lead dipositive and 2 electrons. These lead dipositive ions जो है ये pick up करते हैं sulfate ions from the aqueous concentrated sulfuric acid which is acting as an electrolyte and forms lead sulfate, and that lead sulfate is getting deposited on the on the anodic pellet. Clear? तो ये इसका मतलब है यहाँ पर भी lead sulfate, यहाँ पर भी lead sulfate, यहाँ पर भी lead sulfate डिपोजिट होगा. ओवरऑल जो है नेट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं. क्लियर? आप जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ जाएंगे, ये पिकअप करेगी कैथोडिक रिएक्शन, है ना? यहाँ पे जो कैथोडिक रिएक्शन है, तो कैथोड में हमारा क्या है, लेड डाइऑक्साइड है. तो लेड डाइऑक्साइड जो है वो पिकअप करता है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस वो पिक करता है सल्फेट आयंस फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस इट इज पिकिंग अप द H positive ions from the sulfuric acid of the electrolytic solution, and this is what it is, I am showing it here. Lead dioxide, sulfate ions, H positive ions, and 2 electrons from the anodic reaction, and it is formed again. Lead sulfate is formed here, and there is formation of water. Yani both at the anode and the cathode there is formation of lead sulfate, and both at anode and cathode there occurs accumulation of lead sulfate. Means this lead sulfate is solid and it gets deposited on the anodic as well as the cathodic pellets. Clear? Got my point? So this is the net cell reaction. That is the anodic plus cathodic reaction that gives us the net cell reaction. Actually working में क्या हुआ, during that working of the cell, what happened is this concentration of the sulfuric acid is decreasing. Okay, it is proportionately decreasing.
यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है. व्हाई? बिकॉज सल्फेट आयंस आर गेटिंग कंज्यूम्ड फ्रॉम lead sulfate and that lead sulfate is getting accumulated on the anodic and the cathodic plates. So that means the concentration of the sulfate ions in the sulfuric acid is decreasing. That means the concentration of the sulfuric acid is decreasing. So when concentration of the sulfuric acid is decreasing, that decreases the density of the sulfuric acid. And when the density of the sulfuric acid falls below, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने 1.20 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, द सेल नीड्स रिचार्जिंग. फिर हमें सेल को रिचार्ज करना पड़ता है. जब इसकी डेंसिटी 1.20 से ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर से बिलो हो जाएगी तो व्हाट द सेल इज नीडिंग रिचार्जिंग. अब रिचार्जिंग इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे रिचार्जिंग को समझना है. रिचार्जिंग क्या होती है? तो रिचार्जिंग में हम क्या करते हैं, हम वी आर अप्लाइंग ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट टू रिचार्ज इट. तो जब ये इसको हम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं तो नाउ this electrochemical cell which was working as an electrochemical cell, now it is operated as like an electrolytic cell. It is operated as an electrolytic cell means that यहाँ पे मैं इसको I will let you understand. यहाँ पे एनोड था हमारा पहले, it was negative. यहाँ पे कैथोड था हमारा, it was positive. And when it is connected to the source of direct current को हम कैसे इसको कनेक्ट करते हैं? Negative terminal of the battery, let us storage battery is connected to the negative terminal of the other battery which is recharging it, and positive terminal is connected to the positive terminal of the battery. Clear? And what it does, यहाँ पे नाउ इलेक्ट्रिकल, पहले ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी, इसके बगैर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी. मींस केमिकल एनर्जी वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ पे केमिकल एनर्जी वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल. लेकिन जब हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं, नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड सो एज टू कैरी आउट द chemical reactions. यानी electrical energy is being contributed to chemical energy. Clear? Got my point? तो यहाँ पे it is behaving as an electrolytic cell. Now पहले एनोड था नेगेटिव, कैथोड था पॉजिटिव. Now जब ये electrolytic cell behave करेगी, now this anode will act as a cathode and this cathode will act as an एनोड. यहाँ पे अभी तक एनोडिक रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन हो रही थी. अब जब ये कैथोड एक्ट करेगा, अब देयर विल बी अ रिएक्शन. और पहले एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर वाज हैपनिंग रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन अब ये एनोड बिहेव करेगा, देयर विल बी अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मींस दैट ये जो हाफ सेल रिएक्शन इज हैपनिंग एट द एनोड एंड द कैथोड, दे विल रिवर्स देयर डायरेक्शन. ठीक है ना? the electrons will flow in the reverse direction. means that जो यहाँ पे एनोडिक रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, अब इसी में क्या होगी, अब इस एनोड पे क्या होगी, रिडक्शन. मींस यही रिएक्शन जो है रिवर्स होगी. तो यही रिएक्शन जो है एनोड पे जो है एनोड विल नाउ एक्ट एज अ कैथोड एंड द रिएक्शन आपस में ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी. इसी तरह जो ये कैथोड पे जो है रिडक्शन हो रही थी, अब इस पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन. यानी यही रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी. क्लियर? तो इस तरह से जो है अगेन दिस what will happen because of that, जब ये reverse reactions होगी, there will be deposition of the lead on the anode, है ना, and lead dioxide on the cathode, and sulfate ions will pass into the solution because of the dissolution of the lead sulfate. The sulfate ions will pass into the solution and the concentration of the sulfuric acid will again increase, and that recharges our cell. So during this यहाँ philosophical point यहाँ पे कि we are not getting an endless energy from this cell. It also needs recharging. इसको भी रिचार्जिंग की जरूरत पड़ती है. सो व्हेन वी आर रिचार्जिंग इट, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली एक इसमें बिफोर ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, इट द केमिकल रिएक्शंस हैपन on its own. So there are a disorder in the system. There are disorder in the reactions, है ना. So what is happening? अब इस disorder को हमें कम करना है. तो इस disorder को कम करने के लिए क्या होता है? We have to utilize again the electrical energy so that the reactions gets back and lead dioxide get deposited on the electrodes and the orderedness of the chemical reaction is maintained. And again it will function properly. Clear? Got my point? Thanks a lot.